जी बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का किसी ने मुझे कहा है कि इसकी ज़रा एक कंसाइज वीडियो बना के भेज दूं, तो इसको हम देख लेते हैं कि दिस इज़ अ समरी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसमें सबसे पहले ये है कि यू हैव टू रिमेंबर द हार्मोन्स। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है which is produced by the hypothalamus, and from the hypothalamus ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ये उसकी एक्टिवेशन जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone are also secreted by the pituitary gland, which have a direct effect on the ovary. ओवरी के अंदर से फिर उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ईच ऑफ दीज हॉर्मोन्स दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन, और इनके फंक्शंस जो हैं हम उसको साथ साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। Okay, starting from here, gonadotrophic releasing hormone from the hypothalamus activates the pituitary. The pituitary produces follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, which are going to activate the development of the follicles that are present inside the ovaries. Of these follicles, many follicles start to develop, and then the one that starts to produce estrogen, which is known as the Graafian follicle, it will move on to be fully matured and released, and the rest of them will degenerate. This is known as follicle atresia. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि because of estrogen the egg is going to mature, and then it will be released under the effect of the luteinizing hormone by, and the process is known as ovulation. Estrogen helps in the buildup of the uterine lining. Now, after ovulation, what happens? K inside the follicle, what is left ovary, what is left behind is the corpus luteum. Now, the corpus luteum will start to produce another hormone which is called progesterone. Progesterone helps in the maintenance of the uterine lining, and it cuts out the effect of estrogen. In case the fertilization has taken place, then what happens? Then this cycle is going to be followed. HCG, and then HCG is going to help the corpus luteum to keep on producing progesterone until the placenta has been established. And in case of no fertilization, then what happens? The corpus luteum is going to degenerate, and as it degenerates, the progesterone is going to drop the level, and which leads to the breakdown of the uterine टिश्यूज। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको आगे जो है वो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, राइट। अब ये देखिए, the egg production in the females is a cyclic activity. It is a periodic reproductive cycle of 28 days, which is called the menstrual cycle. It involves changes in structure and function of the reproductive system. It involves ovarian cycle and uterine cycle, which are regulated by gonadotrophin, a special group of hormones. Gonadotrophin is going to be regulated by the gonadotrophins. Right. The steps. Follicle stimulating hormone from the pituitary. It promotes follicle formation. All of the follicles, they degenerate by follicular atresia except one, which is known as the Graafian follicle. The ovary begins to produce estrogen. As estrogen is produced, it inhibits the production of follicle stimulating hormone. क्यों? ताकि follicle stimulating hormone जो है, it should stop the development of follicles when one has already matured. इसलिए कहते हैं कि एक वक्त में एक ओवम जो है वो रिलीज होता है, and it helps in vascularization of the endometrium. Luteinizing hormone from the pituitary induces ovulation. Corpus luteum, which is a yellow glandular mass, it secretes progesterone, which further vascularizes the uterine lining for implantation. अब आप देखिए आपके पास, in case no fertilization is taking place, and the corpus luteum is going to break down, the endometrium breaks down, and then all this is called the menstrual cycle, which takes place in 3 to 7 days. ठीक है, अब ये देखिए, नाउ दीज आर द फेजेस। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, फेजेस कौन कौन से हैं? मेंस्ट्रुअल फेज है, प्रोलिफरेटरी फेज है, सिक्रेटरी फेज है। ठीक है, these are the changes that are taking place inside the uterus, and these are the simultaneous changes which are taking place inside the ovary. These two are going to be having, they are going to be impacted by the same hormone. यहाँ पर उस हार्मोन का कुछ इफेक्ट है, यहाँ पर उस हार्मोन का कुछ इफेक्ट है।
The cycle repeats every 28 days and complete stoppage of the cycle is known as menopause. This is a general diagram, pie graph, which is showing us the 28-day ring. Days 1 to 7, menstrual cycle. Days 8 to 11, the lining starts to thicken for the preparation of the egg. Days 11 to 15, ovulation. Days 18 to 25, if fertilization has not taken place, the corpus luteum starts to fade away. And then the uterine lining detaches and leads to menstruation. ठीक है, अभी देखिए ओवेरियन साइकिल है, आपके पास फॉलिकुलर और ल्यूटियल दो हैं. फॉलिकुलर है बिफोर ओवुलेशन, ल्यूटियल है आफ्टर ओवुलेशन. फिर यूटेराइन साइकिल्स है मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटरी और सेक्रेटरी. ये आपके पास हार्मोन्स का बैलेंस है ड्यूरिंग द होल साइकिल. स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहाँ पर ये लेबल गलत है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है. ब्लैक इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड पर्पल इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Follicle stimulating hormone starts, and then what happens? It starts to develop the follicle. Starts to develop the follicle, and then what happens as the follicle develops, the Greffin follicle, as it starts to develop estrogen. ये देखिए एस्ट्रोजन ने इसको कट आउट करना है और ये फीडबैक आपके पास ये आ गया कि FSH गिर जाना है. FSH पर्पल है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ब्लैक है, यहाँ गलत लेबल हुआ है ग्राफ के अंदर. ठीक है, FSH ने गिर जाना है. एंड एज द ओवा इज गोइंग टू मैच्योर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है इसकी सर्ज आ जाएगी, ड्यू टू विच ओवुलेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, और ओवुलेशन की वजह से द एग इज गोइंग टू बी रिलीज्ड. आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से नाउ वी हैव एंटर्ड द ल्यूटियल स्टेज. अब ल्यूटियल स्टेज में जब एंटर हो गए हैं तो LH इज गोइंग टू ड्रॉप, एस्ट्रोजन इज गोइंग टू ड्रॉप, एंड सर्च किसका आ रहा है? प्रोगेस्टेरॉन. प्रोगेस्टेरॉन इज गोइंग टू बी कैरीड ऑन. ठीक है, यहाँ पर आपके पास कौन कौन से फेजेस हैं? प्रोलिफरेटरी फेज है बिफोर ओवुलेशन एंड सेक्रेटरी फेज है आफ्टर ओवुलेशन. सेक्रेटरी फेज इज मेनली रन बाय प्रोगेस्टेरॉन. दीज आर द यूटेराइन फेजेस एंड दीज आर द ओवेरियन फेजेस. ठीक हो गई बात. अभी देखिए डायग्रामेटिकली, ये देखें हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी और पिट्यूटरी में से LH एंड FSH ये आ गया. इसके साथ ये देखिए ये रिलीज हो गया ओवुलेशन. दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम. इधर आप देखें कि एस्ट्रोजन की सर्ज इधर आई है एंड प्रोगेस्टेरॉन यहाँ पर है. ठीक है, ओवरी की लाइनिंग देखें, यूट्रस की लाइनिंग आप देखें कि विद द चेंज इन द हॉर्मोन्स आप ये देखें कि आपके पास वेस्कुलराइजेशन इनसाइड द यूटेराइन लाइनिंग कितनी ज्यादा जो है वो होती जा रही. दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप चेंज जिसको आप लोगों ने डेज के हिसाब से जो है वो याद रखना है, क्योंकि एवरी डे हैज अ डिफरेंट हार्मोन दैट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, अच्छा ये आपके पास यही फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल स्टेज है, और यहाँ पर पिक्चर में इन्होंने बताया है कि ये आपको हाउ इट अपीयर्स इन अ पिक्चर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ओवरी एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द यूट्रस. ठीक है, न्यूट्रल स्टेज में आपके पास प्रोगेस्टेरॉन बनता है. प्रोगेस्टेरॉन इज अ स्टीरॉयड हार्मोन. Corpus luteum produces it after ovulation, and then placenta produces it after 5 to 10 weeks of जो है ना implantation. The function is that it thickens and maintains the endometrium, and it also thickens the cervical mucus. ठीक हो गया, ये आपका टॉपिक जल्दी जल्दी मैंने करवा दिया है. और ये देख लीजिए, ये भी है, इस टॉपिक को देख लीजिए. अगर ये पेपर में आ जाता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू राइट इट डाउन. ये देख लीजिए, आपके पास ये सारी स्टेजेस हैं, और ये आपके ओवेरियन स्टेजेस हैं, ये हार्मोनल स्टेजेस हैं, ये यूटेराइन स्टेजेस हैं. ये हार्मोनल स्टेजेस का कंसंट्रेशन इट इज इनसाइड द ब्लड. ओके, हार्मोन्स इन ब्लड, यहाँ पर आप हार्मोन्स इन ब्लड भी लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज.